In first MCQ, we have to find the domain of this function, and we know that domain of the function is a set of values which makes the function defined or which gives a valid answer, a finite answer. In other words, we can say that a value which makes the function undefined cannot be the part of the domain. So when we put x equal to 5, the function is undefined because of 1 upon 0. And when we put x equal to negative 5, the function is undefined. So these two values, negative 5 and positive 5, cannot be the part of the domain. So when we observe the options, D is the correct answer, which says set of real numbers except negative 5 and positive 5. जबकि बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं है, लेट्स सी. ऑप्शन ए से सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसमें नेगेटिव 5 एंड पॉजिटिव 5 भी इंक्लूड हैं जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, सो ए इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज़ द क्लोज्ड इंटरवल विच कंटेंस ऑल द वैल्यूज फ्रॉम नेगेटिव 5 to 5. अब इनके बीच वाले वैल्यूज़ पर तो फंक्शन डिफाइंड है लेकिन इन दो नंबर्स पर डिफाइंड नहीं है, सो बी इज़ नॉट द करेक्ट और बेस्ट आंसर. C is the open interval which contains the values from negative 4 to positive 4. अब इन सारे वैल्यूज़ पर तो फंक्शन डिफाइंड है लेकिन सिर्फ यही वैल्यूज़ नहीं है जिन पर ये फंक्शन डिफाइंड है, और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं. सो दैट्स वाई C is not the best answer and the best answer is D, set of real numbers except negative 5 and positive 5. We can also verify from the graph as well. I have drawn the graph of the given function and a line x equal to 5, a vertical line. And if we find the intersection of these two curves, the line and this curve, there is no point of intersection because at x equal to 5 this function is undefined, there is no any proper value. In MCQ number 2, f of x is given, g of x is given, and we have to find the composition function f of g of x, which means f of x में x की जगह हम replace करेंगे 2 plus x यानी कि g of x, and after derivation we get the answer is negative x. So C is the correct answer. MCQ number 3 says which of the following functions is an even function. We know that a function is said to be even function if f of negative x is equal to f of x. तो अब हम हर एक फंक्शन में x की जगह नेगेटिव x पुट करेंगे. अगर रिजल्ट गिवन फंक्शन ही आता है तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. तो हमने फर्स्ट फंक्शन में x की जगह नेगेटिव x पुट किया, देन x कॉमन, देन नेगेटिव का स्क्वायर, एंड द फंक्शन इज x plus 2 whole square. So f of negative x is not equal to the given f of x function. So A is not the correct answer. In option B, in fact square is only on the x, not on the negative. तो हमने x की जगह नेगेटिव x पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, द रिजल्ट इज द गिवन फंक्शन. So f of negative x is equal to f of x, which is the correct answer. So B is the correct answer. Now just for verification, let's check C and D. In C option x की जगह हमने negative x पुट किया और यहाँ पर भी sin x में x negative. And after simplification, we can see that f of negative x is not equal to f of x. So C is not the key. And finally, last option में भी हमने x की जगह negative x पुट किया और सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन सी दैट f of negative x is not equal to f of x. So the correct answer is B, f of x negative x square plus 3. अगर लेट सपोज यही क्वेश्चन ग्राफिकल फॉर्म में आता है, इन चारों फंक्शन के ग्राफ गिवन हो, then you are asked to identify which of the following function is the even function. Then how will you identify? Let me show you through the software. The simplest answer is जो ग्राफ सिमेट्रिकल हो y एक्सिस के, दैट इज द आंसर. अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई करें क्या ये ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक है? नो, y एक्सिस इज हेयर, so this is not the even function. Third function, this is also not the symmetric about y axis, so this is not the even function. And the last one, this is also not symmetric about y axis. But when we see g of x, yes, this is symmetric about y axis, so this is the correct answer. And you can also observe from the values as well. अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो आंसर मिलेगा 2, और अगर नेगेटिव 1 पुट करते हैं तब भी आंसर मिलता है 2. In this way we can also identify the even function. और यही तो मतलब है even function की डेफिनेशन का.
कि फंक्शन में आप x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, आउटपुट विल रिमेन सेम. In MCQ number 4, we have to find the limiting value of this function when x approaches 4. So to find the value, we directly put x equal to 4 and evaluate it, and the answer comes -2. In MCQ number 5, we have to find the limiting value of the given function when x approaches infinity. In fact, अगर हम x की जगह directly infinity put करते हैं तो function becomes undefined. To avoid this situation, we take x common from the numerator, which simplifies with the denominator, and we have 1 minus 1 upon x. अब अगर हम x की जगह infinity put करते हैं तो 1 upon infinity makes 0 and the result becomes 1, which is the key D. Using the software, we can also illustrate and observe that this is the graph of the given function x minus 1 upon x, and when x approaches to positive infinity, the graph moves up to 1, and when x approaches to negative infinity, graph comes down towards 1, which also verifies the answer. In this MCQ, we have to find the inverse of given function, and we know the method to find inverse. First of all, we replace f of x by y, which explains as if y is a function of x, then we isolate the variable x, which explains as then x is inverse of y. And finally, we replace the inverse function notation. So the answer is D. According to MCQ number 7, at y equal to 7, the values of x for y equal to this expression are, in fact, we have to replace y by 7 directly. Then squaring both sides and rearranging the terms, we get x square minus 14x equal to 0. Then factorizing the left hand side, we get x equal to 0 and 14. So C is the answer. We can also illustrate this using the software. This is the graph of the given function. When y is equal to 7, then x is equal to 0. And when y is equal to 7, then x is equal to 14. So 0 and 14 is the answer. In MCQ number 8, the correct representation of the interval is required. Now because of this equal sign, either B or D will be the answer because they represent a closed interval. Further, we can write the first part of the interval as x less or equal to a, because if a is greater than x, then x is less than a. Then we can replace their parts and we can write x greater than or equal to b and x less or equal to a. Now according to this, D is the correct answer, the last option. B is not the correct because if we write the interval of B option, it will be x greater or equal to a and less or equal to b. So D is the correct option. In this MCQ, we have to identify the odd function, and we know that a function is said to be odd function if f of negative x is equal to negative of f of x. तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन में x की जगह नेगेटिव x पुट करते हैं तो वी गेट द सेम फंक्शन, विच मीन्स फर्स्ट फंक्शन इज इवन फंक्शन. जबकि सेकेंड और थर्ड फंक्शन में अगर हम x की जगह नेगेटिव x पुट करते हैं तो वी गेट नेगेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, which means second and third function are the odd function. So the answer is D. Now let's verify using the software. We can see that first function is symmetric about y-axis. So this is even function. जबकि second function is not symmetric about y-axis. हम ये भी देख सकते हैं कि f of 1 पर जो आउटपुट मिल रहा है वो है -1, जबकि f ऑफ -1 पर जो आउटपुट मिल रहा है वो है +1, जो कि -1 का भी नेगेटिव है. Similarly, third function is also
not symmetric about y-axis. And second and third function both satisfy the condition of the odd functions. In second MCQ, we have to find the limit of this function when x approaches 0. We know that according to theorem, sin x upon x when x approaches 0 is always equal to 1. You can check out the video on this theorem whose link is available in iCard as well as in the description of this video. Now in order to apply the theorem, we have to multiply and divide by p, and then applying the limit we will be having p as answer. So the key to MCQ number 2 is A. According to MCQ number 3, the value of x which does not belong to the domain of this real valued function is. In fact, इस MCQ में हमें चेक ये करना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू गिवन फंक्शन की डोमेन नहीं हो सकता. अब आंसर वही नंबर होगा जिसके पुट करने से फंक्शन या तो अनडिफाइंड हो या फिर आउटपुट एक इमेजिनरी नंबर हो. तो जब हमने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज पुट की तो पता चला कि -1 पुट करने से फंक्शन का आउटपुट एक इमेजिनरी नंबर मिलता है. सो द की इज बी. In MCQ number 4, we have to find f of g of -1 for the given function f of x and g of x. तो हमने सबसे पहले f of g of x फाइंड किया by putting x plus 1 whole square in x square, then simplifying, and we put x equal to -1, and finally the answer is 0. In this MCQ, we have to check whether the given function is even, odd or a parametric function. अब गिवन फंक्शन से ये तो क्लियर है कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन नहीं है, because a function is said to be a parametric function if both x and y are the functions of any third variable like this. Now to check even or odd function, we replaced x by -x, and as a result we get negative of the given function. Hence f of x is equal to negative of f of x. So the function is odd function and the key is A. अब सेकेंड MCQ में एक फंक्शन गिवन है और उसकी डोमेन भी गिवन है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. हमें उस फंक्शन के इनवर्स की रेंज आइडेंटिफाई करनी है. तो याद रखें कि जो गिवन फंक्शन की डोमेन होती है वो उसी फंक्शन के इनवर्स की रेंज होती है, एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑलवेज द डोमेन ऑफ इट्स इनवर्स फंक्शन. Here the domain of the given function is set of real numbers except 1, so this will be the range of its inverse function. So the key is C. In MCQ number 3, we have to find f of g of x. It's very easy MCQ. We simply have to replace x by 2x square and the key is B. In this MCQ, graph of a modulus function is given. We have to identify its equation. तो याद रखें कि मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ का वर्टेक्स राइट साइड तब शिफ्ट होता है जब उतने ही यूनिट्स वेरिएबल में से सबट्रैक्ट किए जाएं विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, विच मीन्स या तो C या फिर D में बी द की. और वर्टेक्स अपवर्ड तब शिफ्ट होता है जब उतने ही यूनिट्स एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के बाहर ऐड किए जाएं. Hence the key is C. Now let's verify using the software. So I type ABS of variable x and the vertex is at origin. अब मैं जब 2 ऐड करता हूं तो वर्टेक्स लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेकिन जब मैं 2 सबट्रैक्ट करता हूं तो वर्टेक्स राइट शिफ्ट होता है. सिमिलरली जब मैं बाहर 3 सबट्रैक्ट करता हूं तो 3 यूनिट्स वर्टेक्स डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, और जब मैं इसमें से 3 ऐड करता हूं तो वर्टेक्स 3 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट होता है. Hence our result is correct.
In this MCQ, a function is given and we have to find its inverse. So simply rearranging the terms and isolating the variable x and writing the inverse function in its notation, we get the answer as b. In second MCQ, we have to find the limit of this function when x approaches 0. अब फंक्शन में x इक्वल 0 पुट करने से फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, which means the function is not undefined. इसकी कोई ना कोई वैलिड वैल्यू होगी. So by putting x equal 0 in the given function, we get the result as -1. So the key is A. In this MCQ, an absolute value function is given where x is the domain and domain belongs to set of real numbers except 2, which means 2 डोमेन का पार्ट नहीं है. तो जब 2 डोमेन का पार्ट नहीं है तो 2 पुट करने से जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज का पार्ट नहीं है. So let's put 2 and we get 0. So 0 cannot be the part of range. Let's check more which collection of numbers cannot be the part of range. तो इस फंक्शन में 2 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट की जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन की वजह से वो नंबर पॉजिटिव ही रहेगा. बट ये जो बाहर नेगेटिव साइन है इसकी वजह से आउटपुट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, which means we always will get negative numbers as output. So the key is D, set of negative real numbers. In MCQ number 4, we have to identify the domain of the given function. तो डोमेन वही होगी जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड ना हो. तो वी कैन सी दैट अगर हम इस फंक्शन में x की जगह नेगेटिव a या पॉजिटिव a पुट करते हैं तो फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 यानी फंक्शन अनडिफाइंड होगा. तो a एंड नेगेटिव a कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ डोमेन. इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर पुट किया जाए तो फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा यानी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा. सो द की इज a, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट a एंड नेगेटिव a. According to MCQ number 1, which of the following functions is neither even nor odd function? अब फर्स्ट फंक्शन में जब हमने x की जगह नेगेटिव x पुट किया तो हमें अगेन ओरिजिनल फंक्शन ही मिला, which means f of negative x is equal to f of x, hence the function is even function. अब सेकेंड फंक्शन कैन बी रिटन एज साइन अपॉन x, और अब जब हमने x की जगह नेगेटिव x पुट किया एंड आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन वी गेट नेगेटिव साइन अपॉन cos, which means negative of the tan x, which is negative of the given function. Hence f of negative x is equal to negative of f of x, which means the given function is odd function. और जब हमने थर्ड फंक्शन में x की जगह नेगेटिव x पुट किया तो वी गेट आयोटा रेडिकल x. अब ये ना तो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है ना ही उसके नेगेटिव के इक्वल है, which means this is neither even nor odd function. So the key is C. To confirm the answer, let's verify last function. We know that absolute value of x पॉजिटिव x के ही इक्वल होता है, लेकिन जब हमने x की जगह नेगेटिव x पुट किया तो वी नो दैट नेगेटिव x का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव x ही होता है, which satisfies the condition of even function. So it confirms that C is the correct answer. Now let's verify the answer using software. We can see that first function is symmetric about y-axis, so the function is even function. जबकि सेकंड फंक्शन का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट का जो पार्ट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट होता है, which means this is odd function. And when we show the absolute value function, we can see that it is also even function. It is symmetric about y-axis. लेकिन जब मैं टाइप करता हूँ स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x, it only shows the first quadrant curve. We can explain it as जब हम फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट तो मिलता है, लेकिन जब हम नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलता.
और वी कैन से कोई भी रियल आउटपुट नहीं मिलता। तो फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। In MCQ number 2, we have to find the limit of this function when x approaches 0. अब जैसा कि x 0 पुट करने से डिनोमिनेटर 0 होगा, which means the function will be undefined. To avoid this situation, we will expand the square, and after some simplification, we get 2 plus x. Now we can apply the limit x approaches 0 and the answer will be 2. So the key is D. In third MCQ, we have to find the limit of this function. We know that sin x upon x when x approaches 0 is equal to 1. To match with the theorem, we multiply and divide by p. And then applying the limit, we get p as answer. In first MCQ, we have to find the domain of this real valued function. So again we will use the same concept कि ऐसा वैल्यू जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो दैट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ डोमेन। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट इस फंक्शन में अगर हम 1 और -1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर विल बी 0 एंड द फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। सो 1 एंड -1 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करने से फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। सो द की इज सी, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1. In MCQ number 2, we have to find the value of this function at x equal 1 upon radical 2. So putting the value of x and simplifying, we get the value of function as -4. So A is the key. In third MCQ, we have to find f2 of x, which means f of x. To find this, we have to replace x by x plus 1 upon 2. And by doing this and simplifying this, we get the answer x plus 3 upon 4. So the key is C. In MCQ number 4, we have to find the limit of this function when x approaches 0. Because 0 पुट करने से denominator of the function 0 नहीं होगा तो function undefined भी नहीं होगा. So D cannot be the answer. So putting the value of x and simplifying, we get the value of the function 5. So B is the key.